Identification 2. In identification 1, we have read about so many aspects. In identification 2, we'll be reading ahead. कि anthropometry and everything. ठीक है. It's a short chapter. It will get over within one. Into it. एंथ्रोपोमेट्री पहले हम लोगों का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है. डेक्टाइलोग्राफी, उसका टाइप्स, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, देन मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, ह्यूमन एंड एनिमल हेयर, imposition. Now describe and discuss identification of criminals from anthropometry, dactylography, poroscopy and footprints. Principle. चलिए करते हैं. तो एंथ्रोपोमेट्री बर्टीलन्स. For anthropometry, Bertillon's system is used. Criminal identification called anthropometry. Its attribute is Bertillon, regarded as the first forensic expert. ठीक है. First forensic expert, based on the principle that measurements of various parts of the human body does not alter adult age. यानी 21 years अगर है तो मेजरमेंट जो है वो अल्टर नहीं करेगा एज. सो बर्टीलन ने replaced by fingerprint system by a scientific method of different individuals can have same anthropometry measurement. So anthropometry, color of the hair, eyes, complexion, shape of the nose, ears, chin, पैरलाई कहते हैं हम लोग उसको. Then we have hi Seema. Hello Seema. So we are reading about हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बॉडी किसकी है, या फिर हाउ विल बी आइडेंटिफाई. आइडेंटिफिकेशन जो था वो एंथ्रोपोमेट्री पे बेस्ड ऑन था. हाइट, वेट, BMI. एंथ्रोपोमेट्री इसमें इंक्लूड करता है डिस्क्रिप्टिव डेटा, जैसे कलर ऑफ द हेयर क्या था, आँख क्या था, कॉम्प्लेक्शन क्या था, शेप ऑफ द नोज. इसको पोर्ट्रेट पार्ले भी कहते हैं. देन बॉडी मेजरमेंट, जैसे कि हाइट, हेड, ट्रंक, span of outstretched arm, length of the middle finger, लेफ्ट फोरामेन का और लेफ्ट फुट का क्या लेंथ है, देन राइट ईयर, एंड कलर ऑफ लेफ्ट आइरिस. 11 measurements. So body marks such as moles, scars and tattoos, front view and right profile of the head are also taken. Now dactylography क्या होता है. So dactylography जो होता है ना वो ग्लाइफिक्स या फिर गैल्टॉन सिस्टम भी बोलते हैं. इज दिस a method of identification. So the fingerprint match is reliable evidence of identification. This system was first used held in 1858. Sir Francis Galton 92. What are fingerprints? So the fingerprint palm of all of the feet of the human are some and ridges skin. On the tip of the finger, the friction ridge skin for
Within each basic pattern are numerous possible variations. मैं अभी MBBS कर सीमा तो डिपेंड्स अपॉन आपका एज क्या हो रहा है सीमा. सो अगर दैट मीन्स कि अगर पीरियड्स आना शुरू हो गया है सो तब चांसेस थोड़ा बोन जो होता है ना उसका फ्यूजन हो जाता है. बट अगर अभी पीरियड्स आना शुरू नहीं हुआ है एंड यू आर स्टिल लिबर्टी साइड में हो देन मैं यही कहूँगी कि रात में अच्छे से नींद लो क्योंकि जो ग्रो एंड आई से कि अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइज करो एंड ड्रिंक कैल्शियम एनरिच्ड फूड्स लो. बट इफ़ यू हैव रीच्ड प्यूबर्टी आ चुकी है एंड यू आर अबव दैट तो इट्स नॉट पढ़ाओ क्योंकि बोन जो होता है ना बेसिकली डायफाइसिस एपिफाइसिस ये सब जो होता है वो फ्यूज़ कर जाए. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो फिर से ग्रो करेगा. ठीक है सीमा, डिड आई क्लियर योर डाउट? 16 इज़ अ गुड एज. ये होगा हाइट बढ़ सकता है. आप रात में अच्छे से कम लो 10 से 11 बजे तक सो जाओ. रात में बिल्कुल भी मत जगना. रात ही में ग्रोथ और तू अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइज बढ़िया से करो. अच्छे से दौड़ो भागो और जिसमें दूध हो या कोई भी आलमंड्स नट्स ये सब भी खाओ. सो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट मत रहना. अंडे को खाओ तो चाहिए ग्रो करने में. ये ना हो कि माल नरिश जो हो जाते हैं ना वो तो इट विल टेक सम इट विल पोज सम प्रॉब्लम. सो इसीलिए ये सब सो हम लोग कहाँ पे थे. जो फिंगरप्रिंट्स होता है उस और जो फ्रिक्शन रिजेस होते हैं वो बेसिक पैटर्न बनाते हैं. विद इन ईच बेसिक पैटर्न आर न्यू डर्मल क्रेविंग्स जो होता है और रिजेस अपीयर 15th वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ. प्रांसुल मुझे पीजी के स्पेशलाइजेशन में आई कैन टेक पीडियाट्रिक्स ऑप्थेल्मोलॉजी ये सब आई हैव शॉर्टलिस्टेड बट OBGY इज इन द टॉप. So cravings of the or ridges appear first time from 12th to 16th week of the gets completed by 24 week, that is 6 month of the intrauterine life, and remain life, birth and the life of the individual. The arrangement and distribution of an individual and no two hands resemble each other. So an individual's genetic makeup जो होता है plays a part in determining pattern and riches, but it is not the जेनेटिक मेकअप की वजह से ही केवल हाथ का जो फिंगरप्रिंट होता है बस वही फैक्टर नहीं है. आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप पर डिस्टिंग्विशेबल डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं by both genetic and environmental factors during development in the that two individuals will have the same conventional fingerprint is about fingerprint do not change throughout life unless
स्किन चेंज नहीं करता हमारा फिंगरप्रिंट जब तक डैमेज ना हुआ हो. द फिंगरप्रिंट जो होता है मे बी सीन व्हेन देयर इज स्वेलिंग. टेम्पररी लॉस हो सकता है फिंगरप्रिंट का अगर हाथ में स्वेलिंग हुई हुई है तो. एग्जाम्पल, स्टंग बाय अ बी रिसीड्स. परमानेंट लॉस कब हो सकता है फिंगरप्रिंट का? रिसीड जब लेप्रेसी हुआ है इलेक्ट्रिक इंजरी में एंड आफ्टर एक्सपोजर टू should involve 1 से 2 millimeter beneath the skin surface. It can be erased permanently and deliberately by criminals to reduce their. Erasure can be achieved in a variety of ways, including burns, as. नोट क्या करना है? रिज एट्रोफी विथ अल्टरेशन ऑफ रिज पैटर्न इज सीन. Dermatitis. Examples: acanthosis nigricans, scleroderma, and dry and atrophic skin. जो होता है कैपिसिटेबिन may cause loss of. Elderly persons may have finger since the elasticity of the skin decreases with age. So people with certain genetic disorders such as uh, genital malia, Zinsser's coli, dyskeratosis congenital, Francis-Tichy Zadson syndrome, dermatophilia and adermatoglyphia are seen without. So fingerprint pattern. Ridge pattern different depending upon the presence of core या. And figure this, the ridge curving on its core किसको कहते हैं? The ridge curving on itself. Convergence of ridges delta. In loops, ridges enter from one and exit from the same side they enter. Loop में क्या होता है? जिस साइड से enter करेगा ना, देयर इज वन कोर एंड वन डेल्टा. उसमें वन कोर होता है, वन डेल्टा होता है. लूप्स कैन बी सब डिवाइडेड एंड एग्जिट फ्रॉम द रेडियल साइड. अल्नर रिज एंटर्स एंड एग्जिट फ्रॉम द अल्नर साइड. तरीके का फिंगरप्रिंट होता है. पहला लूप होता है. लूप का भी दो तरीके का होता है, अल्नर एंड रे. 30% लोगों में वही होता है. मेरा कौन सा है? आई शुड नॉट टेल दिस इज वेरी कॉन्फिडेंट बट स्टिल आई वांट टू सी मेरा कौन सा है. लूप में क्या होता है? से एक ही साइड से निकल भी जाएगा. आज वर्ल्ड जो होता है, वर्ल्ड जो होता है सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है. इसमें क्या होता है? गोल लोगों का वर्ल्ड होता है जिसमें एक कोर होता है और डेल्टा दो होता है. ऐसा ट्रायंगल टाइप का डेल्टा बना हुआ रहेगा. इसमें दो डेल्टा बनता है वर्ल्ड में. लेट मी सी इट वेरी क्लियरली. लूप है. सो लूप होता है, वर्ल्ड होता है. तीसरा होता है आर्ट. कोर और डेल्टा ही नहीं दिख रहा है. एंड चौथा होता है कंपोजिट. ये 2 से 3% लोगों में होता है. ठीक है. In whirl, ridges make a complete 360-degree circuit. So whirl में क्या होता है? This is
degree circuit around the center of the print. There are two delta 60 गोला बनाता है लोग. आर्च में क्या होता है डेल्टा एंड आर सब या टेंटेड आर्च हो सकता है. प्लेन आर्च क्या होता है? रिजेस एंटर फ्रॉम द सेम साइड, राइज exit out from the opposite side. That's plain arch. But the ridges stand at an angle of 45 degree or more. This is composite. Composite contains at least two different patterns other than the basic arch. Sometimes it is also referred to as accidental. Okay. So if a scar is formed, valuable addition to the identification process. If a pattern contains neither, it is an arch. अगर कोई कोर नहीं contains one core one delta तब वो लूप है. And delta तब वो wall है. So recording of fingerprint. Fingerprint कैसे रिकॉर्ड करते हैं? Hands are washed, cleaned, print. Prints are taken using printer's ink on a unglazed white impression is to obtain by generally pressing the inked surface paper. Rolled impression क्या होता है? By rolling the inked finger from side to side. In case of criminal, impression of both hand are taken. Now it is conventional to take left thumb impression of male in lieu of signature for illiterate person and on documents. Left और राइट थंब इम्प्रेशन फीमेल का लेंगे. लिटरेट है तो राइट किसका लेंगे? फीमेल का. क्यों? क्योंकि फीमेल हमेशा राइट. The reason cited is that in earlier days males being and as most people are right-handed may have some injury scar in a dead body. If fingerprints are dried up and shivered, soaking the finger in alkaline solution, KOH में आप उसको सोक कर दो और उसके बाद फिंगरप्रिंट ले लो. The surface and smoothed by injecting glycerin या फिर melted parrot, hot water or air into the tissue. So if the prints are not found decipherable, palmar skin of the terminal phalanx of each the hand and placed in a labeled bottle containing 10 or a solution of glycerin and alcohol for preservation and transfer fingerprint bureau. In case of advanced putrefaction and in come out like a glove which can be preserved in formalin, development of fingerprint. So prints can be obtained. Epidermis is lost. Histological section up to from finger pad surface can give satisfaction.
So types of evidentiary fingerprint. Three types of fingerprint. तीन तरीके का फिंगरप्रिंट हो सकता है. क्या क्या? सो पहले यानी विजिबल, दूसरा हो सकता है प्लास्टिक या फिर इम्प्रेशन आइडेंटिफिकेशन प्रिंट. तो पेट needs no processing to be clearly recognized as fingerprint. Dark oil, dirt, blood, and rendering it visible, recognizable, and even suitable for comparison without additional processing. यानी कि कोई प्रोसेसिंग का ज़रूरत नहीं होता है विजिबल प्रिंट को रिकॉग्नाइज. वो ग्रीस से बना हुआ रहता है या डार्क ऑयल से, डर्ट से या ब्लड से रिकॉग्नाइज हो जाता है और सूटेबल होता है कंपैरिजन के लिए. अब प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक इम्प्रेशन या आइडेंटिटेशन, recognizable fingerprint identification in a soft surface such as butter, soap, cheese, paint, putty, fingerprint लग जाए. Such print have distinct 3D character, requires no further processing. Latent print क्या होता है? Requires additional processing to be suitable for comparison. The processing of latent एनहांसमेंट या फिर विजुअलाइजेशन. लोग कोई भी चीज़ एक्सचेंज में आता है तो उसका एपिथेलियल. So Edmund Locard, who was a pioneer in forensic science, Locard's principle. When two objects come into contact with each other, transfer of material from one to another. That is, every contact leaves a trace. देखो क्राइम सीन है, सस्पेक्ट है, विक्टिम है यहाँ पे. ठीक है. सच एविडेंस ट्रांसफर occur in both physical and digital realm. Once this transfer is detected and or individualized, the forensic specialist will have a clue as to what may. एक बार ट्रांसफ़र डिटेक्ट हो जाता है और सब्सटेंस क्लासिफाइड हो जाता है, या स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, will have a clue as to what may have occurred at the scene. The forensic scientist's job is to uncover and reconstruct how the evidence fit into the investigation of a crime. For example, fingerprint left behind a knife, semen deposited in the vagina, under a window at a crime scene. An analysis of pattern of the shoe might reveal the make and model shoe, which will provide stronger link and support. लुकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज था ना. डेवलपमेंट या फिर एनहांस होता है.
So latent prints are the most prominent example of Locard's principle of exchange. Latent print residue palmer या फिर plantar surface is completely free from hair and sebaceous gland, but there are of sweat glands known as echirines, the composition of which forms the basis of the latent contamination by sebaceous secretions. Also quite common from people touching their faces. The salt predominates in perspiration, containing mainly amino acid, urea, lactic acid. Free fatty acid, triglyceride, and wax ester prevail in sebaceous secretion. Stable compounds, and unless they are exposed to extreme heat या फिर humidity and or friction, they may persist. Method of the development of latent print were developed on the latent print residue composition. Now, fingerprint development. नहीं प्रांशुल जी, मुझे एक बार पढ़ के नहीं समझ में आता है, बट ये मैंने एक बार ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर एक बार दूसरे किताब से पढ़ रखा है। दिस मुझे एक्चुअली में सब कुछ पता है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। आई एम जस्ट रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है एंड आई हैव टू कंप्लीट इट, तो इसीलिए आई एम रीडिंग इट। वैसे आई नो सो मेनी थिंग्स, क्योंकि जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। मोस्ट मेथड लेटेंट प्रिंट का डेवलप हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज दैट द लेटेंट प्रिंट रेसिड्यू कंपोजिशन के बारे में से पता है। वेरियस डेवलपमेंट मेथड्स आर समराइज्ड इन दिस टेबल। सो नॉन पेरस सरफेस, प्रिंटेड सरफेस, मेटल और प्लास्टिक जो होता है सेंसिटिव, यूज गोल्ड एंड जिंक। फिंगरप्रिंट पाउडर यूज़ किया जाता है, जैसे मिल्ड एल्यूमिनियम या ब्रास, मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड सकता है, मिथाइल या इथाइल कार्बो एक्रिलेट, देन स्मॉल पार्टिकल रिएजेंट आयोडीन फ्यूमिंग यूज़ किया जाता है। एंड पैरस सरफेस क्या होता है? कार्डबोर्ड और मैट इमर्शन प्रिंटेड सर्फेसेस। डेस्ट फेरो ऑक्साइड जो होता है वो मोस्ट इन हाइड्राइन प्रोड्यूसेस पर्पल कलर, रेहमान्स पर्पल जिसको बोला जाता है नॉन पैरस सरफेस के लिए। देन फिजिकल डेवलपर जैसे कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड टू डिटर्जेंट्स, पाउडर जैसे देन सुपर ग्लू फ्यूमिंग्स, ये सब यूज़ होता है। मुझे नहीं पता, मैं जेमिनाई यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे एक्चुअली में नहीं पता एंड आई हेट एआईज। ऑल्दो ये हमारे काम को बहुत कैपेसिटी कम कर देता है, सो इट्स गुड कि मेरे पास कम से कम एआईज हो। आई डोंट लाइक यूजिंग इट। सोच सकते हैं ना, एआई आने के बाद आई डोंट इवन थिंक, आई एम लाइक कॉपी पेस्ट एंड दैट्स रियली बैड फॉर हम लोग का ब्रेन। The neuroplasticity से when you do something, when you work hard, then your neurons, जब चैट जीपीटी आ गया है वो सब कुछ करके दे रहा है, यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग। सो आपको लगता है कि आपका ब्रेन जो है वो डेवलप करेगा कि सो यू शुड, मतलब ठीक है अब तो एआई का जनरेशन है, आपको पता तो होना चाहिए कि किस तरीके से काम करना है, क्योंकि बहुत सारे काम तो एआई से हो रहा है, बट मुझे तो पढ़ाई करनी है ना।
कम से कम यही रखती हूँ ताकि उससे डिपेंडेंस ना हो मुझे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी फ़ायदा होगा। जो हार्ड वर्क होती है ना, वो बहुत लॉन्ग रन तक रहती है साथ में, बट ये जो इजी वर्क होता है, ये कहीं ना कहीं इट मेक्स यू वीक। कितना और बाकी है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Other methods for detecting latent print. आई नो आपके लिए होगा, क्योंकि यू आर डूइंग रिसर्च वर्क ना, तो उसके लिए AI विल मेक रिसर्च वर्क वेरी इजी, बट आई एम स्टडिंग। और अगर मैं अपना दिमाग ही नहीं लगाऊं, क्योंकि मेडिकल साइंस क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट गेसेस कि आप कितना एक्यूरेट डायग्नोसिस कर पाओगे, उसके लिए आपको अपना दिमाग लगाना है। एंड व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग AI वी स्टॉप यूजिंग आवर ब्रेन, और एज सुन एज वी स्टॉप यूजिंग आवर ब्रेन, इंटीग्रेशन तो क्या, पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ChatGPT कैन रिप्लेस अ डॉक्टर, उसके स्किल को नहीं रिप्लेस कर सकता है, बट उसके दिमाग को रिप्लेस कर सकता है बहुत आराम से। सो वी हैव टू डेवलप आवर ओन ब्रेन। अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग होता है। सो डॉक्टर्स के प्रोफेशन में वी हैव टू स्टडी, मेहनत हमें खुद से करनी पड़ेगी, वरना अगर ChatGPT आ गया ना, तो इट विल बी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक। सो अदर मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग लेटेंट प्रिंट क्या होता है? रेडियो एक्टिव सल्फर डाइऑक्साइड, यूजफुल फॉर फैब्रिक एंड एडहेसिव टेप्स। सूडान ब्लैक, ये क्या होता है? यूजफुल फॉर सर्फेसिस कंटामिनेटेड बाय ग्रीस या फिर फूड स्टफ। Then we have osmium tetraoxide, useful for both porous and non-porous surfaces. Then uh, electronography, जिसमें this technique involves dusting the skin surface with lead या फिर iron and then exposing to long wave X-rays, Z Grenz red rays. Grenz rays emission of radiation from lead power can be captured on a photographic film. The silver halide present in the film are darkened by radiation and can produce image of ridges detail present on the skin surface. So scanning electron microscopy with an energy dispersed X-ray spectrometer can be useful for imaging of the latent fingerprints. So identification protocol क्या होता है? What do you think identification protocol means? The unknown impression is examined and all minute are analyzed and then compared to the known to determine if a relationship exists. An acronym ACE-V for four stages of the examination process is given: analysis, comparison, evaluation, verification. So weight is assigned in comparison not only to the number of minutiae in agreement, but also the rarity and clarity of those characteristics. So differences in appearance due to recording technique, pressure, and other factors must be anticipated. The comparison can result in one of the three possible
conclusions, insufficient ridges, detail to form a conclusion, exclusion or identification, that is that they were made by the same finger. Now fingerprint का classification कैसे करते हैं? The modern Henry system followed in the US is used for the classification of 10 print sets of a fingerprint card for one individual. So, the development of computerized fingerprint storage and retrieval system has made searching larger files for single and partial prints routine. It has also rendered classification largely unnecessary. By convention, 12 points of fine comparison were accepted as proof of identity, suggested by Locard. For quite a few decades, the minimum number of minutiae points rule is being followed. A fingerprint expert or digital system needs 4 to 5 points as minimum for a match, although the more points matched, the better. So, मेडिको लीगल एप्लीकेशन क्या होता है फिंगरप्रिंट का? ये वाला पार्ट पढ़ लेते, देन विल टेक थोड़ा सा रेस्ट एंड विल स्टार्ट अनदर सेशन. So, medical legal application is identification of criminal whose fingerprint were found at the scene. Identification of fugitive through fingerprint comparison. Exchange of criminal identifying information with Identification Bureau of foreign countries. Cases of mutual interest. Identification of unknown deceased person. पर्सन सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया या फिर मिसिंग पर्सन या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट. आइडेंटिफिकेशन इन अ डिजास्टर वर्क. Identification in the case of accidental exchange of the newborn infant. Identification of license procedure में for automobile, firearm, aircraft etc. for insurance of passport and visa issuance. Then problem of mistaken identity and detection of bank forgeries. Biometric system for health workers. Fingerprint scanners wirelessly sync with a health worker's smartphone to link patient's fingerprint to their health record. Then biometric attendance. NMC has directed the facility and resident to mark their attendance by Aadhaar enabled biometric attendance systems so as to check the absentee in all private and government medical institutes. Now, electronic fingerprint readers have been introduced for security appliances such as log-in authentication for identification of computer users. Fingerprint sensors gained popularity in the mobile notebook PC market. Electronic resignation and library access registration. So, fingerprint can be used to validate electronic registration, cashless catering, and library access. Sex determination. The amniotic acid contains in fingerprints can be used to determine sex of the individual. In this method, ninhydrin is combined with optimized extraction protocol. Then identification of recently handled materials. Extrinsic materials that are left in fingerprint after recent handling of such material can be demonstrated using infrared microscopy, which can link as to who was handling the key material, including explosives, can be powerful investigating tools. Then detection of drug use. The section in fingerprint contains residue of
various chemicals and their metabolites जैसे कि tobacco, marijuana, cocaine और methadone which can be detected. Then police department in Canada has advised parents to fingerprint their children if they apprehend kidnapping. Now, Sir Francis Galton जो थे published his book in 1892, Fingerprints, and is regarded as classic work. The first fingerprint bureau in the world was officially established in Kolkata on 12th June 1897 at Writers Building. Sir Edward Henry devised a fingerprint classification system that was adopted in the British India. He printed it in UK in 1899. Automated fingerprint in identification system जो AFIS is a strong search retrieval exchange system for fingerprint for and palm prints, electronic images, and demographic data, biometric data. AFIS utilizes specialized computer software configuration to create unique algorithm based upon relationship between the characteristic present within the fingers or palm friction ridges. To match a print, fingerprint technicians scan the print in question and computer algorithm are analyzed and to mark all the miniature points, scores, and deltas detected on the print. This enables fingerprint to compare with the millions of file print within a matter of second. देन पोरोस्कोपी जो होता है ना वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद चीलोस्कोपी है जो लिप का प्रिंट होता है वो. देन हेयर है. देन मेडिको लीगल क्वेश्चंस कुछ कुछ हैं. उसके बाद हमारा है सुपर इम्पोजिशन. सुपर इम्पोजिशन है और मिसलेनियस मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है. बस इतना ही है. सो विल बी रीडिंग आफ्टर लाइक 5 to 10 minutes. I'll come back, launch another session. Bye guys.